Hello and welcome back to the Football Medico. So, Carabao Cup final 0-0, 120 minutes, and Liverpool wins on penalties 11-10. Am I disappointed? Yes. Am I angry? No. Definitely. First of all, यार, what a match, a great match, I'll say. Klopp ने अपनी press conference में अभी बोला that it was a game where two lions were fighting and none wanted to lose. Yeah, perfectly summed up, I'll say. A great game by both the teams. All the 22 players on the pitch and the 10 substitutes that came on, everyone was perfect. I cannot name one player जिसकी एक बहुत खराब गेम हुई हो. To be honest, बहुत खराब गेम हुई. Starting with the Chelsea perspective, yeah, the lineup, we predicted this lineup, a very predicted lineup, I'll say. But Ziyech was not starting and that was a big loss for us as he was injured. तो वो bench पे भी नहीं आ पाया. बैक थ्री ट्रेडिशनल बैक थ्री हमारी विद क्रिश्चियनसन आउट, जो सुबह रूल आउट हो गया था दैट ही वाज नॉट बी प्लेइंग. सो क्रिश्चियनसन वाज आउट टुडे. सो इट वाज अ ट्रेडिशनल बैक थ्री, वही वाली हमारी चारबा, रुडिगर एंड सिल्वा alongside wing backs Marcus Alonso as Pliqueta, Kante, Kovacic, and a front three of Mount, Havertz, and Pulisic. A great team performance, actually a great team performance. Starting from the back, Edward Mendy. If you are still not rating this guy as one of the best in the world, please go and don't watch football ever. मत देखना अगली बार football. If you still don't rate this guy, the double save that he made against Mane, what a save. Like सबसे पहले वो नाबी कीटा का शॉट आया, a good save to make. उसके बाद उसने माने का क्लोज रेंज रोका and that was just cat reflexes, actually cat reflexes. Coming on forward, थियागो सिल्वा भाई, पिछली वीडियो में भी अपनी चेल्सी रिव्यू की मैंने इसकी तारीफ करी थी एंड अगेन आई विल बी अप्रिशिएटिंग दिस गाय. ग्रेट परफॉर्मेंस बाय हिम अगेन. एंड वन प्लेयर जिससे मैं एक पब्लिक अपोलॉजी मैं पहले भी कह रहा था मैं मांगूंगा ऑन वॉच अलोंग एंड आई विल डू दैट ऑब्वियसली. आई एम रियली सॉरी मार्कोस अलोंसो, आई एक्चुअली डाउटेड यू, बट what a performance by going against Mohamed Salah. I'll say the best player playing the football game of football right now for me. He is the man in form, one of the best players right now in the world. Usko, I'll not use the word pocketed. Obviously, that is a bit sus. That word is not appropriate to say, but Marcus Alonso did not let him play. मतलब साला आज कहाँ तुम्हें ट्रबल करता दिखा रहा था. Salah on his days, on his the quality that he has, he can trouble any defensive line. But Marcos Alonso, hats off man, hats off. Obviously वो थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम्स है, he was not tracking back on time and मतलब वो अपनी स्पेस में वापस नहीं आ रहा था, but Rudiger was there to help him. Great game by Rudiger and Kovacic. Both of them were helping Alonso to restrict Salah and we did that very well. To be honest, we did that very well. On the right side, Luis Diaz was causing a lot of problems to our right side. Aspilicueta and Trevor Chalobah बहुत problems बना रहा था, but Chalobah had a good game. He was making those crucial blocks, interceptions, and उसने वो Diaz का इफेक्ट रूल नेगेट तो नहीं करा, but I'll say still उसने उसको contain करने में help करा. Now Kovacic and Kante, no doubts they are the best duo right now for us and maybe the best duo in the Premier League to play in that pivot. Both were absolutely amazing and our front line. Now I'll come to the points that तुम सुनना चाह रहे थे. Pulisic chance missed. The 90 times it should be a goal out of the 100 times if you get such balls. Mount के लिए 1-on-1 मिस करा उसने, दो बार ही मिस करा 1-on-1. एक बार तो पोस्ट हिट कर गया, वेरी अनलकी. एंड जस्ट टू डिफेंड हिम, टू बिकम हिज एडवोकेट, आई कैन से कि वो नहीं खेल पा रहा, मतलब 2-3 मैचेस नहीं खेला फिराने एंड ही वाज आउट विद एन इंजरी, कमिंग ऑफ एन इंजरी. यू लूज योर क्लिनिकलिटी बिकॉज तुम पिच पे नहीं हो तो ऑब्वियसली यू लूज दैट. बट I don't want to defend him. Obviously, he missed it, but overall, he played a very good game. मतलब link up play, pressing, and वो press resistant play जिसके लिए हमने उसको खिलाया था. On point by him and Havertz भाई. A very big statement to say, but he might be the solution जो हम चेल्सी की नंबर 9 के लिए ढूंढ रहे हैं. He might be that guy. He was absolutely perfect. He was dropping down. He was passing the ball quickly. He was making chances. First half में उसने 4 chances बनाए थे. That was most by any player by that time. And second half start होते हुए भी he was again creating chances. Clear cut chances बना रहा था वो बंदा हमारे लिए.
A great game by him. Pulisic should have buried the game earlier. हम चाहते, if we would have been clinical, rather I'll say if we would have been lucky on a day, we would have won the match 3-0. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारी. Actually it was अच्छी परफॉर्मेंस. Coming on to some controversial decisions. Talking about Liverpool का goal. Obviously all the Liverpool fans, great, huge ups to you. You deserved the match, but वो goal के बारे में you cannot be cocky. Because according to the rule book, if you are standing in an offside position और तुम उस बंदे को धक्का दे रहे हो who is going to defend a set piece, you cannot do that. Van Dijk was clear off and वो Reece James को hold कर रहा था. That was very much evident. So I don't think Liverpool fans should be cocky about that, and they definitely won't be. मतलब जीत गए हो तो हारते तो things would have been different. But still a great performance from Liverpool and controversial decisions. One decision I want to talk about. Yeah, अब थोड़ा एंग्री मोड स्टार्ट हो जाएगा बट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस. क्या था भाई वो चालेबा पे? नाबी कीटा कमिंग विद अ फ्लाइंग बूट. वो अपना पैर नीचे ला रहा है. ही वाज एक्चुअली ब्रिंगिंग इट डाउन बट एक इंस्टेंस में धक्का मार दिया उसको. मतलब ही किक्ड हिम. Kicking in the groin with your studs up when you're showing your studs, that is a clear foul. When any of part of your stud is touching the opposite player high upper मतलब एक certain level से ऊपर मारते हो, that is a clear red. and यहाँ तो तुम groin पे मार रहे हो भाई. क्या कौन से नशे. and the thing that actually frustrated me was it was not even checked by VAR. भाई क्या सोने हो? क्या चाय क्या कर रहे थे? चाय पी रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ बता दो मुझे. VAR रूम में you have to check that. It was a clear red for me. तुमने चेक नहीं करा बट ठीक है. I cannot be so, I'll say I cannot cry over this decision because VAR से मैं कुछ और expect नहीं कर सकता. To be honest, I have lost all my faith. Talking about that goal जो टूकल ने भी बात करी about Lukaku's goal, वो लाइंस जो तुमने बनाई है, nobody understands उस लाइन बनाने का क्या सिस्टम है. टू बी ऑनेस्ट लुकाकू एक फ्रेम से ऑन लग रहा है, एक फ्रेम से ऑफ लग रहा है. सो आई कैन नॉट डिफेंड दैट. द अदर टू गोल्स जो हमने मारे ऑफसाइड पोजीशन से, दैट वर क्लियर ऑफसाइड. बट लुकाकू वाला आई स्टिल डाउट. बट it does not matter. At the end of the day, Liverpool are the winners. I congratulate them, obviously. Coming on to the substitutions, people who are criticizing Tuchel for bringing on Kepa, and I'm not targeting any specific audience here. I'm targeting those pundits. भाई इतने बड़े पंडित हो, and to be honest, I'm in no position to say anything to them. They have achieved much bigger things. But तुम ऐसी statements national television पे बैठ के मत दो to be honest. कि why did he sub off Mendy? Mendy was perfect and he should not have done. Do not criticize him. You were the same people who were actually appreciating जब उसने UEFA सुपर कप में करा. केपा ने सेम चीज हमें सेम पोजीशन से सुपर कप जिताया है. सो प्लीज एनी फैन आल्सो हु इज स्टिल थिंकिंग कि केपा को क्यों मेंडी को क्यों सब ऑफ करा, केपा को क्यों लाए, प्लीज भाई यू ऑल आल्सो नो. मैच स्टार्ट होने से पहले अगर मैं तुम्हें बोलता ये गेम पेनल्टीज में जा रही है वन गाय, तो सब बोलते वाज कमिंग ऑन वाज केपा. इवन लिवरपूल फैंस, चेल्सी फैंस. एंड केपा की क्या गलती थी भाई? मतलब देयर वर 10 और 11 परफेक्ट पेनल्टीज फ्रॉम लिवरपूल एंड 10 perfect penalties from us as well. अगर एक मैच का रिजल्ट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द 22nd पेनल्टी व्हेन अ कीपर इज मिसिंग अगेंस्ट अनदर कीपर, दैट शोज कि दोनों टीमों ने कितना फाइट करा उस गेम में एंड बोथ द टीम्स डिजर्व टू विन. वो ऑब्वियसली नहीं हो सकता था एंड लिवरपूल डिजर्व्ड इट इन ऑल सेंसेस. आई विल से Keller, a great performance by him. Luis Diaz on point, Van Dijk on point. I really have to appreciate the Liverpool team. You played well, you did it all, you deserved the cup. And just guys, do not give hate to Kepa. He was not the he was not the man to blame. Penalties made was all about luck and we lost on penalties. I just want to end on saying this, that we lose together, but we win together as well. So let's hope what happens further forward. हमने चांसेस मिस करे, वी दैट इज द ओनली नेगेटिव आई टेक, कि हम क्लिनिकल नहीं थे विद द चांसेस, विद आर फिनिशिंग, नॉट जस्ट चांसेस. चांसेस हमने बहुत अच्छे से क्रिएट करे हैं. वी एक्चुअली गेव एवरीवन अ टेम्पलेट हाउ टू बीट अ लिवरपूल साइड. अब लिवरपूल के पास एक मोमेंटम है टू विन द लीग, बट दे वी आल्सो एक्सपोज्ड अ टेम्पलेट. वी गेव एवरीवन अ टेम्पलेट कि लिवरपूल की बैकलाइन को तुम कैसे एक्सपोज कर सकते हो. ऑब्वियसली वी आई एम नॉट सेइंग सबके पास उतनी क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स प्रोफाइल, बट वी हैव गिवन द टेम्पलेट टू एवरीवन. So let's see what happens. What happens with Liverpool now? What happens with Chelsea? Losing a final is not well. And जो तुमने मैंने जो मतलब हाँ,
आफ्टर द मैच विजुअल्स देखिए, टूकल गैदरिंग एवरीवन, मैच के बाद एक हर्डल बनवाया टूकल ने, एंड ही वाज द मैन टू गिव ऑल द इंस्ट्रक्शंस। एंड उस इंस्ट्रक्शंस में हमें दिख रहा था ही वाज गैदरिंग द टीम टुगेदर, एंड दिस ब्रिंग्स अस यूनिटी भाई। हम कप नहीं जीते बट हम यूनिटी जीते हैं इस मैच से। वी आर ब्रिंगिंग दैट टुगेदरनेस अगेन। आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट टूकल इज डूइंग। एंड जो पिछले 24 घंटे में चेल्सी के साथ हुआ है, अ परफॉर्मेंस लाइक दिस, आफ्टर दैट we deserve all the respect. All the players deserve the respect, even management, the staff, everyone deserves all the respect. A great game to witness. Thank you so much for listening today. And I'll just end the video by saying, keep the blue flag flying high.